और स्टूडेंट्स आज सॉल्व कर रहे हैं आईएसआई का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर है 2024 वाला, ठीक है, एमएसक्यूई। द फॉलोइंग एक सोलो ग्रोथ मॉडल दिया हुआ है लीनियर रिग्रेशन फंक्शन के हिसाब से, वेयर जी आई इज द लेंथ ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ द कैपिटल ऑफ द रियल जीडीपी and yi0 is the capital of the real GDP, I at the beginning of the time period 0. So ni is the population at I, si is the savings rate of the country, xi stands for the set of other control variables, and ci for the error term, epsilon I for the error term. The solo growth model predicts the expected sign of the regression coefficient beta 0. Okay, so according to the solo growth model, the equation is क्या है, जी आई ए प्लस स्ट्रक्चर। तो सोलो ग्रोथ मॉडल के हिसाब से अगर रिग्रेशन इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं बी लॉग ऑफ सी लॉग ऑफ वाई। सो द टर्म बी लॉग ऑफ दिस थिंग ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, जो कि एन से दर्शाता है, एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टीपी जो कि ये जी से दर्शाता है, ठीक है। सो द सोलो मॉडल हायर द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ पर कैपिटा आउटपुट एंड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेडी स्टेट। सो देयरफॉर ये जो कोएफिशिएंट है, सो द कोएफिशिएंट बी which captures the combined effect of the population growth and the technological progress is predicted to have a positive according to the model's assumption, ठीक है। So the positive sign of B will be there, so it will be positive, so B will be greater than 0, okay। So here sorry, beta 0 in this case will be positive, so option number A is